एक सवाल है, क्या आपको पता है कि 2025 में एक ऐसा हिस्टोरिकल दिन आया जब इंडिया की मोर देन हाफ 51.5% 51.5%. 51.5% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से आई। जस्ट इमेजिन दैट। I mean, that's a massive milestone. हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। आज हम ऐसे ही कुछ माइंड ब्लोइंग एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स की गहराई में उतरेंगे। तो इफ यू वांट टू सी द वर्ल्ड विद अ स्मार्टर, बेटर इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक ठोको और वो घंटी वाला नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन कर लो ताकि आप कोई भी एक्शन मिस ना करें। बिल्कुल, और आज की हमारी चर्चा दोस्त एक डिटेल्ड लर्निंग मैप की तरह है। हम शुरू करेंगे फ्रॉम द ग्लोबल स्टेज ऑफ UNFCCC COP30, फिर विल डिकोड द एंटायर गेम ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। ओके। उसके बाद हम इंडिया की सिटीज में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करेंगे और इंडिया की फैंटास्टिक ग्रोथ स्टोरी इन रिन्यूएबल एनर्जी को भी जानेंगे। एग्जैक्टली और हम वहां रुकेंगे नहीं। फिर हम एग्रीकल्चर में सीड मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, आसमान के साइलेंट गार्डियंस यानी वल्चर्स के कंजर्वेशन, और भी बहुत कुछ। और हाँ, अ होल सीरीज ऑफ सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये एक एक्शन पैक्ड नॉलेज राइड होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नेम UNFCCC COP30, ब्रॉड माइक्रो थीम, ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस एंड की आउटकम्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज COP30? बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC की 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी। द 30th वन। हाँ, एंड गेस वेयर इट वाज हेल्ड? इन बेलेम, ब्राजील, ओह, इन ब्राजील। राइट इन द हार्ट ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसीलिए इसे बहुत स्पेशल नेम्स दिए गए हैं, जैसे कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कॉप ऑफ ट्रूथ और फॉरेस्ट कॉप। समझे? वाओ, दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। प्लीज। तुम सोचो, जैसे स्कूल में फाइनल एग्जाम से पहले एक सुपर इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिसमें सब स्टूडेंट्स और टीचर्स फ्यूचर प्लान करते हैं। COP30 वाज एग्जैक्टली दैट, बट अ ग्लोबल मीटिंग फॉर अर्थ्स फ्यूचर। और इस बार फोकस सिर्फ प्रोमिसेस पर नहीं था, बल्कि ऑन एक्चुअली गेटिंग द वर्क डन, एक्शन पर। कूल ना? Absolutely. That's the perfect analogy. अब चलो, let's dive into the details. So, introduction. ये meeting was very, very special for two big reasons. ओके, क्या थे वो? First, it happened on the 10th anniversary of the Paris Agreement. राइट, 2015 में हुआ था। Exactly. And second, 2025 was the deadline for all countries to submit their new climate action plans, यानी nationally determined contributions, or NDC 3.0. So, you can imagine the pressure was really on. तो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड सबमिशन डे था। You could say that. अब थोड़ा background. The story of UNFCCC starts from the 1992 Rio Earth Summit. याद रखना, it's one of 3 sister conventions. और दूसरी दो? The other 2 are the UN Convention on Biological Diversity and the UN Convention to Combat Desertification, UNCCD. गॉट इट। The very first COP meeting happened in 1995 in Berlin, Germany. So it has a long history. वाओ, 1995 से। हाँ. Now the core logic, the Belem package. इस मीटिंग का सबसे बड़ा, most important outcome था the Belem package. द बेलम पैकेज, ओके। इसमें there were several major agreements. Let's break them down one by one. लेट्स डू इट। First, the Belem mission to 1.5 degree C. ये एक एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। इसका मेन एम है एम्बिशन बढ़ाना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉस्टर करना इन 3 एरियाज: मिटिगेशन, अडैप्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट। मिटिगेशन, अडैप्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट, द 3 पिलर्स। करेक्ट। सेकंड, एंड दिस इज अ गेम चेंजर, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, TFFF। TFFF, इंटरेस्टिंग नेम। हाँ, इसके अंडर एक मैसिव $125 बिलियन फंड क्रिएट किया जाएगा। ये फंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नेशंस को उनके फॉरेस्ट मेंटेन करने के लिए डायरेक्टली पे करेगा। वेट, डायरेक्टली पे करेगा? Directly, and the most amazing part, 20% of this money will go directly to indigenous peoples and local communities. ये बहुत important point है। 20%? That's huge. It is. India has joined it as an observer. Okay. Third, the Baku to Belem roadmap to 1.3D. T as in trillion. Yes, T as in trillion. ये एक official pathway है to mobilize $1.3 trillion every single year by 2035. This is by far the most ambitious climate finance target ever set. Mind-blowing numbers. Fourth, FINI. फॉस्टरिंग इन्वेस्टेबल नेशनल इंप्लीमेंटेशन। इसका गोल है नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स को इन्वेस्टेबल बनाना, यानी अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स। और 2028 तक इसका टारगेट है टू डेवलप अ 1 ट्रिलियन पाइपलाइन फॉर एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट्स। फिर से ट्रिलियन? It seems finance was the main focus. बिल्कुल। फिफ्थ, द बिलीम 4x प्लेज ऑन सस्टेनेबल फ्यूल्स। इटली, जापान, इंडिया एंड ब्राजील जैसे देशों ने प्लेज लिया है कि बाय 2035 दे विल क्वाड्रुपल, यानी 4 गुना, द यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स एंड ई-फ्यूल्स कंपेयर्ड टू 2024 लेवल्स। 4 times. And sixth, the Belem Health Action Plan. This is the world's first international climate adaptation plan specifically dedicated to health. का मतलब ये है कि global climate governance is now moving beyond just making promises, like हम ये करेंगे. The focus has shifted to accountability. मतलब हम ये कैसे कर रहे हैं. It's a shift from talk to action. Action and implementation. Exactly. And the conclusion. So in short, COP30 ने implementation, adaptation finance and forest conservation को center stage पर लाकर एक completely new direction set किया for global climate action. Okay, this is super detailed. My first question is about the TFTF fund. आपने कहा 125 billion. Who is going to fund this massive amount and why is India just an observer and not a full member? That's a very good and very important question. देखो, the funding for TFF will come from a mix of sources. Developed countries, the private sector, or multilateral banks. Okay,
A public-private mix. Yes. The founding members are countries with huge tropical forests, जैसे Brazil, Indonesia, and the Democratic Republic of Congo. The ones with the most at stake. Precisely. इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस इसलिए लिया ताकि वो इसके मैकेनिज्म को पहले डीपली अंडरस्टैंड कर सके एंड सी हाउ इट अलाइंस विद इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट्स बिफोर मेकिंग अ फुल कमिटमेंट. इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव, समझे? So it's a wait and watch approach? You could call it a study and align approach. I see. Second question. The new finance target is $1.3 trillion per year. The previous target was 100 billion. इतना बड़ा jump क्यों? Great question. Great question. The previous target of $100 billion per year, Yeah. which was set back in 2009, Yeah. was never fully and consistently met. हाँ, ये तो हमेशा न्यूज़ में रहता था, the broken promise. बिल्कुल. इसने एक huge trust deficit create किया. Yeah. The $1.3 trillion figure is a massive jump because it's a more realistic reflection of the actual need of developing countries to fight climate change. ये इस बात का सिग्नल है कि अब फाइनेंस को सीरियसली लेना ही पड़ेगा, no more excuses. So it's about closing the gap between rhetoric and reality. Exactly. My third question is about the just transition mechanism. Yeah. इसका practical meaning क्या है for people whose jobs depend on the coal industry, for example? Okay, this is critical. Just transition का मतलब है कि while we shift to clean energy, we must not leave anyone behind. किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, right? For coal workers, इसका मतलब हो सकता है government funded reskilling programs, उन्हें renewable energy sector में new jobs दिलाना और उनकी communities में invest करना to create new economic opportunities. The transition has to be smooth and fair. It must be people-centric. So it's not just about shutting down industries, but about building new ones. Exactly. Building a new green economy for everyone. Okay, question 4. The sources mentioned a declaration on information integrity. इसकी जरूरत क्यों पड़ी? Why now? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि there is a huge amount of misinformation and information pollution being spread about climate change. Fake news, basically. हाँ, fake news, climate denial, delaysm, बहुत कुछ. This declaration is an international commitment to fight this disinformation, combat fake news, and maintain public trust in climate science. साइंस पर ट्रस्ट बनाए रखने के लिए. बिल्कुल. And my last question. इतने सारे plans और funds हैं. How will success be tracked? How will we know if countries are actually doing what they promised? Accountability is key. बहुत अच्छा सवाल है. International bodies like the International Energy Agency, IEA, will track progress. Okay. फिर there are mechanisms like the Global Stock Take, which happens every few years to review collective progress. Global stock take. I've heard of that. Yes. Plus, there is a huge emphasis on transparency frameworks, ताकि सबको पता चले कि कौन सा देश क्या कर रहा है और कितना पैसा कहाँ जा रहा है. Accountability and transparency. Got it. Now pause and practice saying this part aloud. Practicing, COP30 was the COP of implementation, focusing on the BILIM package, the game-changing TFFF for forests, and a new ambitious $1.3 trillion finance roadmap. In short, the entire focus of COP30 was to shift the world from pledges to real action, with a clear emphasis on finance, forests, and fairness. Topic name. Other important outcomes of COP30? Broad micro-theme, specific initiatives and coalitions for climate action. Okay, तो COP30 में सिर्फ बड़े पैकेजेस ही अनाउंस नहीं हुए. There were also many targeted initiatives launched. अच्छा? इन्हें breakthroughs या accelerators कहा गया. ये specific problems को solve करने के लिए हैं. सोच लो, if the BILIM package was the main mission plan, then these initiatives are like small, specialized task forces. Perfect analogy. हर एक task force का एक specific objective है. जैसे, एक team to fight extreme heat, another to reduce food waste, and so on. It's about breaking a big problem into smaller, manageable parts. Exactly. Let's look at the key ones. Introduction. ये initiatives show करते हैं कि climate action अब सिर्फ governments का काम नहीं रहा. It's becoming a collaborative effort. Cities, companies और civil society सब मिलकर काम कर रहे हैं. A whole of society approach. Precisely. Background. पहले COPs में focus was mainly on national commitments. But now, the concept of multi-level action is becoming very popular. इसका मतलब है कि solutions are being implemented at the local level too, not just at the national level. Bottom-up action. Yes. अब, core logic. Key initiatives. First, the Systematic Observation Impact Bond. ये weather और climate data के लिए दुनिया का पहला impact bond है. इसका aim है to help 30 least developed countries, LDCs, and small island developing states, SIDS, build better early warning systems for extreme weather events. Wow, an impact bond for weather data. That's very innovative. इसमें 185 शहर जुड़ गए हैं. They are implementing heat action plans and nature-based solutions, जैसे urban forests and green roofs. Green roofs. I love that idea. The target is ambitious. 2030 तक 3.5 billion लोगों को heat risk से बचाना. 3.5 billion. Third, the food waste breakthrough. This is led by the United Nations Environment Program, UNEP. इसका टारगेट है 2030 तक global food waste को half करना. अगर ये हो गया, तो it can reduce methane emissions by up to 7%. That's huge. Food waste is a massive climate issue that people don't talk about enough. सही बात है. Fourth, the Oceans Breakthroughs Dashboard. ये 5 important ocean sectors में progress track करेगा. Marine conservation, renewable energy, shipping, aquatic food और coastal tourism. A dashboard, so real-time tracking. Hopefully. And fifth,
द इंडिजिनस लैंड टेन्योर कमिटमेंट्स ILTC 15 गवर्नमेंट्स ने गोल सेट किया है टू एडवांस द ओनरशिप एंड प्रोटेक्शन ऑफ 160 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फॉर इंडिजिनस ग्रुप्स 160 million hectares. That's a country-sized area. एब्सोल्युटली सो द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इन इनिशिएटिव्स का सीधा असर हमारी लाइव्स पर पड़ेगा बेटर वेदर प्रेडिक्शन से साइक्लोन्स में जाने बच सकती हैं अर्बन फॉरेस्ट से शहरों में गर्मी कम हो सकती है इट्स ऑल वेरी प्रैक्टिकल Tangible benefits. एग्जैक्टली कंक्लूजन ये छोटे छोटे फोकस्ड एक्शंस मिलकर एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच टू फाइटिंग क्लाइमेट चेंज कॉम्प्लीमेंटिंग द टॉप डाउन गवर्नमेंट पॉलिसीज Great. My first question is about the impact bond. ये काम कैसे करता है? How is it different from normal funding? एन इम्पैक्ट बॉन्ड इज अ वेरी इनोवेटिव फाइनेंशियल टूल इसमें क्या होता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स इनिशियली फंड द प्रोजेक्ट Okay, private money comes in first. यस If the project achieves its predefined social or environmental goals, तब आपका government or a donor agency repays the investors with a profit. और अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया अगर project fail हो जाता है, तो investors lose their money. This ensures performance-based funding. It links finance directly to results. Risk private sector का, reward shared. दैट्स स्मार्ट इट इंसेंटिवाइजेस सक्सेस Exactly. सेकंड क्वेश्चन फूड वेस्ट कम करना क्लाइमेट चेंज से कैसे जुड़ा है थोड़ा और समझाइए It's a very direct connection. जब food waste landfills में सड़ता है ना, it releases methane gas. मीथेन द सुपर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस हाँ, and methane is a super potent greenhouse gas, over 80 times more powerful than CO2 in the short term. So when you reduce food waste, you directly reduce methane emissions. It's a massive win-win for the economy and the environment. So saving your leftovers is actually climate action. बिल्कुल Third question. You mentioned indigenous land tenure. Indigenous communities को land rights देना, conservation के लिए इतना important क्यों है? बहुत सारी स्टडीज ने शो किया है कि इंडिजिनस कम्युनिटीज आर द बेस्ट गार्डियंस ऑफ फॉरेस्ट्स एंड बायोडाइवर्सिटी क्यों? उनके पास ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज होता है जनरेशंस का नॉलेज दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट दीज इकोसिस्टम्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे सो उन्हें लीगल राइट्स टू देयर लैंड देना is one of the most powerful tools for conservation. It's also a critical part of climate justice So it's about respecting traditional wisdom. and empowering the best stewards of the land. Fourth question. A global cooling pledge was mentioned in the sources. Is India a part of this pledge? The source material doesn't specifically mention if India is a part of the global cooling pledge or not. Okay. But it's important to know that India is working very hard on the cooling issue at a national level through its own India Cooling Action Plan. Given that India is a hot country with a rising demand for ACs, this is a very critical issue for us. Right. The cooling challenge is huge for India. It is. Last question. इन सब अलग-अलग initiatives के लिए funding कहाँ से आ रही है? How involved is the private sector? The funding source is very mixed, which is a good thing. कुछ initiatives में UN agencies like UNEP and WMO are involved. Okay, public money. Right. For others like the Climate and Health Funders Coalition, you have private funders like Bloomberg Philanthropies and the Gates Foundation. So there is a very strong focus on the public-private partnership, PPP model. So everyone is chipping in. That's the idea. Okay, time to practice this. Practice saying, beyond the main package, COP30 launched targeted initiatives like the Global Mutiro against extreme heat and the food waste breakthrough to accelerate bottom-up climate action. In short, COP30 wasn't just about a single big agreement. It was a cluster of many focused, practical actions aimed at solving specific climate-related problems on the ground. Topic name, India's position at COP30. Broad micro-theme, championing climate justice and equity. Okay, India. COP30 में India's voice was very strong and clear. इंडिया ने दो चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया क्लाइमेट जस्टिस और इम्प्लीमेंटेशन Justice and implementation. हाँ हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स वर नॉन नेगोशिएबल इसको ऐसे समझो दोस्त जैसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है हे द वर्क शुड बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन हु हैज मोर रिस्पांसिबिलिटी नॉट इक्वली जिसने ज्यादा मेस किया है वो ज्यादा सफाई करेगा सो ये सही है इंडिया का स्टैंड वाज समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस ऑन द ग्लोबल स्टेज बिल्कुल सही एनालॉजी लेट्स डेल्व इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ इंडियाज पोजीशन इंट्रोडक्शन इंडिया ने G77 प्लस चाइना बेसिक व्हिच इज ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया चाइना और LMDC लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज जैसे ग्रुप्स के थ्रू अपनी बात रखी सो स्पीकिंग एज पार्ट ऑफ अ लार्जर कोalition Yes, these groups amplify the voice of the developing world. Background. Historically, India's stand has always been based on the principle of common but differentiated responsibilities, or CBDR. CBDR ये टर्म बार-बार आता है हाँ, and it's very important. इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जिम्मेदारी सबकी है, कॉमन है, बट डेवलप्ड कंट्रीज की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज दे हैव बीन पोल्यूटिंग फॉर मच लॉन्गर. सो कॉमन रिस्पांसिबिलिटी बट नॉट कॉमन ब्लेम अच्छा पॉइंट है. Now, core logic India's key stances. First, equity and climate justice. India reiterated that equity and CBDRC must remain the cornerstone of the global climate regime. India firmly stated that the burden of mitigation cannot be shifted to those who have the least responsibility for creating the problem. बेसिकली यू ब्रोक इट यू फिक्स इट In a way, yes. सेकंड Climate finance as a legal obligation. This was a very strong point. India ने साफ कहा कि providing finance as a legal obligation for developed countries under the UNFCCC, it's not charity. नॉट चैरिटी बट एन ऑब्लिगेशन Yes, India called finance the key barrier to raised ambition. पैसा नहीं तो एक्शन नहीं Simple. Third, adaptation and the global goal. India declared कि COP30 must be the COP of adaptation. हमने adaptation goals के नए indicators का स्वागत किया but also asked for flexibility to suit national circumstances. One size does not fit all. बिल्कुल Fourth, just transition mechanism.
India called the establishment of this mechanism a significant milestone and said that it should lead to action-oriented institutional arrangements. सिर्फ बातें नहीं, concrete action. Fifth, mitigation and net zero. India stressed that developed countries must achieve net zero earlier than their current targets. क्यों? ताकि developing countries के लिए थोड़ा carbon space बचे for their development. Right, the carbon space argument. Sixth, unilateral trade measures. India strongly rejected measures like carbon border taxes, calling them instruments of protectionism that unfairly target developing countries. Trade protectionism in the name of climate action. That's the concern. And finally, technology transfer. India asserted that technology access is a right, not a bargaining tool. हमने intellectual property barriers हटाने की मांग की for clean technologies. Technology सबके लिए होनी चाहिए. So, real-world impact. India's stand ensures that climate action does not become an excuse to slow down the growth of developing countries. It is an attempt to make global policy economically and socially fair. It's about balancing development and environment. Absolutely. Conclusion. In COP30, India acted as a leader representing the voice of the Global South and keeping the theme of climate justice at the center of all negotiations. Okay, my first question is this. जब इंडिया यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स को रिजेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? कैन यू गिव एन एग्जांपल? जरूर. For example, अगर यूरोपियन यूनियन डिसाइड करे कि to put an extra tax on steel imported from India because its production involved carbon emissions, that would be a unilateral trade measure. Okay, so it's a one-sided decision. Yes. India's argument is that such steps disrupt global trade, may violate WTO rules, and unfairly penalize the exports of developing countries. Got it. Second question. The statement, technology access is a right, not a bargaining tool, is very powerful. इसका practical meaning क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि अगर किसी वेस्टर्न कंपनी के पास हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल या न्यू कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर पेटेंट है, हाँ. तो उसे डेवलपिंग कंट्रीज को अफोर्डेबल प्राइस पर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स के थ्रू अवेलेबल कराना चाहिए. That technology should not be used as political leverage or as a bargaining chip in negotiations. Clean technology should be a global public good. So, knowledge sharing for the greater good. Exactly. Third question. India net zero earlier for developed countries की मांग क्यों कर रहा है? ये carbon space concept क्या है? सोचो, the earth has a limited carbon budget, एक total amount of CO2 जो हम 1.5 डिग्री गोल के अंदर रहते हुए emit कर सकते हैं. Okay, a finite budget. Yes. Developed countries, since the Industrial Revolution, have already used up a very large part of this budget. उन्होंने अपना हिस्सा यूज कर लिया. और उससे ज्यादा. So, the principle of equity says that they should now reduce their emissions much faster, यानी achieve net zero earlier to leave some carbon space for developing countries like India to meet their development needs. So it's about historical responsibility. Precisely. Fourth question. क्लाइमेट फाइनेंस को लीगल ऑब्लिगेशन कहने से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एड या हेल्प से ये अलग कैसे है? इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है. Calling it a legal obligation makes the financial commitment a legally binding promise under international law. Ah, so it becomes enforceable. Exactly. It is no longer voluntary donation or madad. This increases accountability, and developing countries can use legal and diplomatic channels to challenge developed countries if they don't fulfill this commitment. It changes the power dynamic completely. It's a game changer. It is. And fifth question, what is the difference between the BASIC and the LMDC groups that India is a part of? Good question. BASIC is a coalition of 4 large, rapidly developing economies: Brazil, South Africa, India, and China. The big four. Right. LMDC, or the like-minded developing countries, is a slightly larger and more hardline group within the G77, which includes countries like Cuba, Egypt, and Iran, in addition to India and China. Both groups represent the interests of the global south, but उनके specific focus areas कभी-कभी थोड़े अलग हो सकते हैं. So different coalitions for different strategic purposes. बिल्कुल. Excellent. Now pause and practice this. Practice saying, India's core stance at COP30 was anchored in equity and CBDR, demanding that climate finance and technology be treated as a legal right, not charity. In short, India positioned itself as a firm and leading voice for the global south, directly linking climate action to justice, historical responsibility, and the rights to equitable development. Topic name, climate finance. Broad micro-theme, bridging the gap between promises and delivery. Let's talk about the big M, money. Climate finance. Basically वो पैसा है जो climate change से लड़ने के लिए चाहिए. COP30 में इस पर बहुत डिस्कशन हुई, क्योंकि पैसा is the biggest roadblock in climate action. सब कुछ आकर पैसे पर ही रुक जाता है. सही बात है. A key development was that India and 12 other developing countries announced a plan to develop country or regional platforms for climate and nature finance. Country platforms. इसका real life example क्या हो सकता है? Simple. सोचो, एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए अलग-अलग लोगों से चंदा लेने के बजाय आप एक सिंगल वेल मैनेज्ड फंड बनाते हो. एक central fund. हाँ, जहां सब कंट्रीब्यूट करते हैं और पैसा ट्रांसपेरेंटली यूज होता है. These country platforms are designed to do exactly that for climate finance at a national level. To streamline the funding process. Exactly. Let's get into the details of this finance puzzle. Introduction. These new platforms will be supported by the Green Climate Fund, GCF, under its Readiness Program. The GCF, याद रखना, is the main financial mechanism of the UNFCCC. GCF, सुना इसके बारे में. Background. Developing countries need approximately $1.3 trillion every year for climate action. 1.3 trillion. Every year? Every single year. Lekin, the new collective quantified goal, NCQG, that was agreed upon at COP29 is only for $300 billion annually. So you can see there is a huge, massive gap between what is needed and what is promised. $1 trillion gap? Yes. Now, core logic issues and India's stand.
First, ambition without delivery. The world has big targets, but the funding is not guaranteed. There is an over-reliance on private finance, which is a problem. क्यों? प्राइवेट फाइनेंस तो अच्छी चीज है ना? Huh? But private capital does not like to invest in adaptation projects where profits are not direct. अच्छा, Second, unspent funds at GCF. This is ironic. The GCF has about US 19 billion committed to it, लेकिन इसका सिर्फ around 40% has actually been disbursed. Why? Because its procedures are extremely difficult and complicated. पैसा है पर मिल नहीं रहा. सही बात? Third, India's needs and steps. India needs an estimated USD $10.1 trillion to achieve its net zero target by 2070. 10 trillion. To raise this money, India has taken domestic steps like issuing sovereign green bonds, SGBs, launching a carbon credit trading scheme, CCTS, and the RBI has created a green deposit framework. So we are not just waiting for foreign money. Now we are creating our own mechanisms. And fourth, viewpoints. The core argument from developing countries is based on three principles. Historical responsibility, developed nations who polluted more should pay more, distributional inequality, the most vulnerable countries get the least help, and intergenerational equity. Delaying finance today hurts future generations. Three very powerful ethical arguments. Absolutely. So, real world impact. The lack of finance has real consequences. इसका मतलब ये है कि coastal areas में flood protection walls नहीं बन पा रही हैं, या farmers को climate resilient seeds नहीं मिल पा रहे हैं. People's lives are at risk. It's a matter of life and death. It is. Conclusion. The Country Platform Initiative is a significant attempt by the Global South to take leadership in climate finance. Its success will now depend on good implementation and full transparency. First question, GCF का पैसा डिसबर्स क्यों नहीं हो पा रहा? प्रॉब्लम कहाँ है? The primary problem is the complexity of the disbursal mechanism. बहुत सारी paperwork, very strict compliance requirements, और अक्सर co-financing की conditions होती हैं. So too much red tape. Exactly. For smaller nations like LDCs and SIDS, it's almost impossible to meet all these requirements. इसीलिए GCF is often called difficult to comply with. Second question. Private finance adaptation projects में invest क्यों नहीं करना चाहता? आपने कहा था ये एक बड़ा issue है. देखो, private investors primarily look for a clear return on investment. Profit. हाँ, mitigation projects like building a solar panel farm or a wind farm sell electricity and generate direct profit. Makes sense. लेकिन adaptation projects like building a cyclone shelter or restoring a mangrove forest are essential for saving lives, but they don't generate direct financial returns. इसलिए इनमें public grant-based funding is absolutely necessary. So profit versus people? In a way, yes. Public finance needs to step in where private finance won't go. Third question, can you explain what India's sovereign green bonds are? Of course, these are bonds issued by the government of India. इनसे जो पैसा रेज होता है वो स्पेसिफिकली ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन लाइक मेट्रो रेल्स या पोल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट्स. इट्स अ वे टू रेज मनी फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट. So investors can put their money directly into greening the country. दैट्स द आइडिया. Fourth question, in climate finance transparency, ये डबल काउंटिंग का इशू क्या है? डबल काउंटिंग एक मेजर प्रॉब्लम है. मान लो a developed country gives a loan to a developing country that is partly for development and partly for climate action. Okay. They might count the entire loan amount as climate finance. Oh, that's not fair. या फिर they might report the same project in different reports to inflate the numbers. This is double counting. That's why transparent accounting rules are so important. We need honest numbers. बिल्कुल. And the fifth question, ये नए country platforms current fragmented project approach को कैसे better करेंगे? अभी क्या होता है, अलग-अलग डोनर्स अलग-अलग छोटे प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं. कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता. So, a lot of inefficiency. Yes, a country platform will act as a central hub. वो देश की क्लाइमेट प्रायोरिटीज के हिसाब से एक बड़ा नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएगा, और फिर इट विल अलाइन ऑल डोनर्स, पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनेशनल अंडर दैट सिंगल प्लान. इससे एफिशिएंसी और इम्पैक्ट ड्रामेटिकली बढ़ेगा. एक single unified strategy. That's the goal. Great. Okay, let's practice this. Practice saying, climate finance suffers from a huge ambition delivery gap, and the new country platform initiative aims to improve fund coordination and accessibility for developing nations. In short, the battle for climate action is increasingly becoming a battle for climate finance, with developing nations now creating their own mechanisms to take control of their financial destiny. सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि आज भी हमारे देश के कई तौर तरीके